Good evening, everybody, all the traders out there, and welcome to the session from Stocko InCred Money in the webinar series. And पहले भी हम लोगों ने सिंगल कैंडल पैटर्न का सेशन किया था. ये पार्ट 2 इसको बोल सकते हैं कि ये दिस विल बी इन अ कंटिन्यूएशन एंड इट विल बी अ डबल एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न. So today's topic is double and triple candle pattern. So let's explore, understand, and execute and we are doing this webinar on 24th Feb 2026. But before we start the session, मैं एक बार disclaimer read out कर देता हूँ. The disclaimer says that investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing, and a brokerage will not exceed the prescribed limit. So welcome you all once again. As a brief introduction, I'll give about myself. My name is Hitesh Chotalia, and I have close to 26 years of market experience, being a strategist at Sher Khan for stocks, commodities, technical market strategies and I was part of the Asia Pacific equity research team at Citi Global Markets. Then I was a strategist with Centrum, Sher Khan Education, and Motilal Oswal, head of Finlon Academy. And that's a brief about me. So let's friends, are you all excited to be part of the session? Either give me a yes or a no. Yeah, that's encouraging to see. So, and आज जो कैंडल हम सीखेंगे, जैसे हमने एक कैंडल का पैटर्न देखा था, आज मल्टीपल कैंडल पैटर्न्स रहती है 2 and 3. We will see both the candle patterns. So, but before we go into the session, my co-instructor along with me, Deepak ji, will take only a 20-second poll. Yeah, Deepak ji, you can make the poll live, and post that we'll launch ourselves into the session. So the poll says, do you use double and triple candlestick patterns for your trading? Let's see what the result is. Yes, 50%, no 50%. So we have a mixed bag out there. Yes, sir. I think they have completed the voting. So now we'll go into the session. So जब सबसे पहले डबल कैंडल पैटर्न में आता है वो है बुलिश इनगल्फिंग. बुलिश इनगल्फिंग एक रिवर्सल पैटर्न है. So how to identify bullish engulfing? कैसे पता कर सकते हैं कि ये रिवर्सल पैटर्न है? जो पहला कैंडल बनता है वो डाउन ट्रेंड रहता है. प्रीवियसली द ट्रेंड इज डाउन. So the first candle has a filled real body in line with the downtrend. चलो रेड कैंडल है और पहले मंदी का दौर चल रहा था. So that's how this candle is red. The second candle open is below the previous candle's body. अगले दिन मार्केट जो खुलता है वो जो कैंडल खुलता है it opens below the body of the previous candle. And the second candle's body engulfs the previous candle's real body. मतलब जो green candle आपको दिख रहा है मंदी के बाद, वो जो कैंडल है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग राइज आया था उस दिन, और पूरे दिन का जो भाव है which is which engulfs the previous red candle. So engulfing का मतलब है जो previous candle it engulfs the entire body. So this is called a bullish engulfing candle. और एज अ ट्रेडर हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहाँ देखना है? जब एक मंदी का दौर गुजर रहा हो, कि एक डाउन स्विंग हो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए. सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू सी एंड स्पॉट द बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न. और कैंडल पैटर्न्स में एक चीज आप ध्यान रखो, बुलिश कैंडल डिक्लाइन के बाद आइडेंटिफाई करना, बेयरिश कैंडल रैली के बाद आइडेंटिफाई करना. इन बिटवीन अगर बुलिश बेयरिश कैंडल आता है तो दैट मीन्स द कैंडल इज करेक्ट बट द लोकेशन इज नॉट as per the location is not correct. So bullish engulfing कैसा दिखता है? And the shadow of the candle is insignificant. जो body है which is the difference between the open and the close, that matters. वो पूरा previous day के candle को ऊपर होना चाहिए. It should be covering it. And it should be an expanded range candle. मतलब काफी एक बड़ा range का candle होना चाहिए which is a bullish candle. And bullish candle appears in a downtrend.
बुलिश एनगल्फिंग ये दिखाता है कि एक मंदी का दौर चल रहा था, नाउ प्राइसेस हैव halted, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया. This strong buying can be a reversal. That's what the candlestick gives us an indication of a bullish engulfing. So let's see how a bullish engulfing looks like. अगर आप चार्ट में आप देखो तो प्रीवियसली भाव गिर रहा है और जब गिरावट का दौर से चल रहा है यहाँ पे प्राइसेस आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, देन देयर वाज अ हॉल्ट, एक बार रुक गया भाव एंड कैन यू सी देयर वाज एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल मिला. ये जो ग्रीन कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के बॉडी को पूरा इनगल्फ कर लिया. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल. सो दैट वाज अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल. और हर एक कैंडल का एक रूल रहता है. मुझे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं टारगेट क्या रहेगा. रिमेंबर वन थिंग, कैंडल शोज रिवर्सल, कैंडल शोज स्टॉप लॉस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, कैंडल डोंट शो टारगेट लेवल्स. क्लियर एवरीबॉडी? और अगर हमें गिव मी अ यस और अ नो. यस. तो अगर हमें ऐसा कैंडल दिखता है तो इट गिव्स मी एन इंडिकेशन दैट नाउ थिंग्स हैव रिवर्स्ड. इफ यू आर गोइंग लॉन्ग, द रिवर्सल इज देयर and the last low should always be your stop loss. Candle हमें reversal बताता और risk management का levels बताते. Right? So now let's go and spot this candle in the live markets. So let's go to the index. So मैं निफ्टी के ग्राफ पे जा रहा हूँ. So this is Nifty. If I look over here, can you spot over here as a bullish reversal candle engulfing? Anybody? Just take your cursor. These are what we call a bullish engulfing candle. Right? एक previous candle को पूरा engulf कर ले रहा है. So that always marks a reversal. But आप एक चीज ध्यान रखो, when prices are declining, वो जब decline आ रहा है, after a decline, bottom पे आपको bullish candle के लिए wait करना है. और एक दो चार्ट देख लेते. So whatever we are doing for educational purpose, we will always go to the live chart and see it. SBI देखते, State Bank क्यों नहीं आ रहा? Okay, it's there. So now this is State Bank. If you see State Bank में, can you spot a bullish engulfing candle? चलिए तेजी का दौर चल रहा था, नो डाउट अबाउट इट, बट यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने मिला. हो सकता था ये डिक्लाइन और भी स्ट्रेच कर सकता था, इट कुड गो फर्दर. बट वंस प्राइसेस आफ्टर दिस डिक्लाइन, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया, लेट्स से अराउंड द लो, एंड व्हेन इट halted अराउंड द लो, कैन यू ऑल स्पॉट अ बुलिश engulfing candle? This one. तो ये कैंडल का जो बॉडी है, the body of this candle engulfs the previous candle, and the second is it came after a downtrend. So this tells us that it's a bullish engulfing candle and it's a reversal from down to up. So it tells us about the direction. Or second data, agar aap bullish ho, so then this should be your stop loss. So candlesticks are for reversal and risk management. Give me a yes everybody if you have understood it. Either a thumbs up or a thumbs down. स्मॉल ऑब्जर्वेशन, अब ध्यान रखो, ऐसा नहीं हर एक बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग ही आएगा. तो दैट एज अ ट्रेडर यू हैव टू ट्रेन योर आईज टू स्पॉट एटलीस्ट 15 to 20 कैंडल्स, जो कि एक सिंगल कैंडल पैटर्न के अंदर में आते, डबल कैंडल पैटर्न के अंदर में आते और ट्रिपल कैंडल पैटर्न के अंदर में आते. सो ऑल दोस थ्री एज अ ट्रेडर यू शुड ट्रेन योर आईज टू पिक इट अप. Just let me do the Q&A settings. So far, I don't have any questions. So now the next candle which we are going to see is bearish engulfing. Now bearish engulfing is, you should look at a bearish engulfing candle pattern एक rally के बाद, upswing के बाद. So how will bearish engulfing candle दिखता कैसा है?
लोकेशन आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट कैंडल हैज अ रियल बॉडी विच इज ग्रीन। चलो तेजी चल रही थी और तेजी के साथ भी एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। सो वी सॉ कैंडल इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस अपस्विंग विच इज अ ग्रीन कैंडल। तो सो फार अपने को लगता है एवरीथिंग इज फाइन, बट आफ्टर दैट द सेकंड कैंडल ओपन इज अबव द प्रीवियस कैंडल बॉडी। अगले दिन गैप अप भाव खुला। गैप अप खुलने के बाद देयर वाज अ सेलिंग थ्रू आउट द डे। तो व्हाट हैपेंड इज जो सेकंड कैंडल है is within the it engulfs the body of the previous candle। अगर आप देखो तो रेड कैंडल जो है वो पूरे ग्रीन के ऊपर छा गई है और द बॉडी इज engulfed, द एंटायर बॉडी। बॉडी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे, अगर टेल रहता विक रहता तो हम उसे engulfing नहीं करेंगे। ये रेड कैंडल का बॉडी है, इट शुड engulf the entire green candle। Shadow is irrelevant, location it should appear after an uptrend। So everybody will be able to spot a bearish engulfing candle after an uptrend. Yes. So let's see how it looks like. Or bearish engulfing candle, what does it tell us that? It tells us that a high is in place. एक swing high establish हो गया या short term high हो गया based on whatever time frame you are watching. So this is a bearish engulfing candle. Prices are rallying, rallying, rallying. एक दो दिन price नीचे आया। So first candle was in continuation green, then suddenly you saw एक बड़ा सा red candle आया और वो candle की जो body थी वो previous candle की body के पूरो निगल गई उसको। That's why we call it engulfing। So that was a bearish engulfing। And bearish engulfing हम कहाँ पे spot करते हैं? We spot it after a rise in price, rally के बाद reversal के लिए। So let me go to some of the price charts for bearish engulfing। Let's say मैं सिप्ला के प्राइस चार्ट पे जाता हूँ। So if I go to Sipla, can anybody spot a bearish engulfing? यहाँ पे आप सब तेजी में हो गए, भाव ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, prices are just rallying, right? Suddenly what happened after a rally? After a rally, what I'm seeing right now is that there was an uptick in price. Next day भाव इसके ऊपर खुला and एक strong selling आया। आप बोलोगे पहले भी selling आया था। What's the importance of this selling? The importance of this selling is it gives me the pattern of a bearish engulfing, which means that अगर आप देखो, let me zoom this chart a bit। If you see the body of this candle, red, engulfs the entire candle's previous body। अब देख रहे हो everybody? That is why we call it as a bearish engulfing। So small observation, after an uptrend अगर bearish engulfing ऐसे बनता है, so it tells us that a high is in place and post that आप ही देख सकते हो market has declined। So will you all able to pick up a bearish engulfing pattern? Give me a yes after a rally। So let's see currently जो दो पैटर्न हमने दिखे उसमें से एक भी आया? No, currently there is no pattern। So let's go to the indices, which is Nifty, और लेट्स गो टू इन्फोसिस। देखिए अभी टेक्नोलॉजी स्टॉक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं लेट्स से वेदर दे वर देयर और नॉट। सो इफ आई गो टू इन्फोसिस, कहीं पे तो हाई बना था ना इन्फोसिस का। इफ आई सी दिस हाइज अराउंड इन्फोसिस आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली, आपको ये चीज का ध्यान रखना एज अ ट्रेडर। दिस इज इन्फोसिस, लेट्स से यहाँ पे जस्ट फोकस हियर बिफोर दैट बिग डिक्लाइन। इन्फोसिस एक तेजी के दौर से गुजर रहा था। तो नाउ यहाँ पे एक हाई आया। आफ्टर दैट इफ यू सी ये जो रेड कैंडल है, कैन यू सी दिस रेड कैंडल इज एनगल्फिंग द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। सो एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन, एंड अगर मुझे वहां पे पता रहता है कि देयर इज अ डबल कैंडल पैटर्न कॉल्ड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, मतलब ये जो रेड बॉडी है ना वो प्रीवियस जो छोटी सी कैंडल है उसको पूरा निगल गई, इनगल्फ द एंटायर थिंग। So small observation told you that a high is in place. And after that, if you see Infosys has a strong decline. So will you all be able to spot a bearish engulfing candle pattern? Give me either a yes or a no.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर अ रैली, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपका पूरा ट्रेड बदल सकता है. So we have done the bullish engulfing and the bearish engulfing pattern. After that, let's now go to dark cloud cover. डार्क क्लाउड कवर का मतलब क्या है? बहुत अंधेरा छा गया. सी जापानीज कैंडल स्टिक में द नेम ऑफ द पैटर्न, कैंडल जिसको पैटर्न आते हैं, इट्स अपॉन डे टू डे जो हम लोग देखते हैं. तो अगर डार्क क्लाउड कवर मतलब एकदम ब्लैक छा गया, सो वी ऑलवेज कंसिडर इट एज अ बैड. तो डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है? पहले एक तेजी चल रही होती, देयर इज एन अपस्विंग गोइंग ऑन एंड द फर्स्ट कैंडल हैज अ फिल्ड बॉडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अपट्रिंग. अभी तक आपको लग रहा नहीं सब सही है, चलो तेजी चल रही है, ग्रीन कैंडल आया, बड़ी बॉडी है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके. तो फर्स्ट कैंडल कलर इज ग्रीन. नेक्स्ट कैंडल गैप्स अप ऑन द ओपन. नेक्स्ट डे एक गैप अप आ जाता है, और गैप अप आने के बाद the second body has a large body. So the second body's close is below 50% mark of the previous candle's body. So फिर अच्छा एक दिन मार्केट ऊपर खुलता है और ये जो बॉडी है प्रीवियस कैंडल के 50% नीचे क्लोज देती है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ डार्क क्लाउड कवर. अगर तेजी के बाद आपको dark cloud cover दिखता है, it's a good enough indication to tell us that a high is in place, whether it could be a swing high or a trend high or a momentum high based on the time frame of charts you are watching. So now where dark cloud cover, how to spot it? This is the price chart I have seen. Previously देखिए trend up रहेगा, previously the swing or trend you say it's up. So till this green candle आपको लगता नहीं everything is fine. Then suddenly next day prices open above this, ऊपर भी गया, but ultimately it closed. So ये जो body है वो previous body का 50% नीचे close हो रहा है. Can you spot it? So that is why I call it dark cloud cover. So काफी एक मंदी का कवर आ गया मार्केट में, और ये आता है that means that high itself has is now an established resistance. So let's see a pattern for dark cloud cover in the markets. PPT में I always prefer कि हम live में जाके देखें. So let's take some of the stocks. If you have any stocks, let me know. This is let's say Mahindra and Mahindra. If you see Mahindra and Mahindra, right? Can anybody spot a dark cloud cover? दिखा यहाँ पे. So what happened over here is this was the previous candle. भाव खुला उसके ऊपर, but throughout the day selling रहा and it engulfed the entire this thing. So this is what we call a dark cloud cover. So Deepak ji, if there are any questions from me, let me know. Okay, I think let me enable my chat also. Just I'll take a 1 minute this thing. No questions are so far. Okay. Okay. So let's go now next. तो डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, तेजी के बाद आपको इस पे ध्यान देना है. सेकेंड इज जिस तरह से डार्क क्लाउड कवर एक रैली के बाद आता है और अपस्विंग में देखने मिलता है, सेम वे डिक्लाइन में और ऑन अ डाउन स्विंग we look for a bullish piercing. It's an opposite of dark cloud cover. Mithilesh Rathi says, great question, sir. How to use this information for a trade? Okay, I'll take a pause and tell you. See, candlesticks जो रहती है ना मिथिलेश जी, उसको हम बोलते हैं एडिशनल सपोर्टिव टूल्स. सो लेट्स से अगर एडिशनल सपोर्टिव टूल्स में अगर डार्क क्लाउड कवर आता है, let's say here I am getting or any of the earlier candle pattern, let's say जो फर्स्ट हम लोगों ने देखी थी निफ्टी. I'll just take, yeah, it's a great question, it's a good question. So let's say this is a
बेयरिश इनगल्फिंग। ओके, एक बार मुझे यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग दिख गया मिथिलेश जी भाई, तो इससे दो चीज क्लियर होती है। तो दिस इज अ बेयरिश इनगल्फिंग, मैं मार्क कर देता हूँ सर। ओके, so this is my bearish engulfing candle. Clear, sir? Give me a yes or a no. A कैंडल की पैटर्न परफेक्ट है बेयरिश engulfing. सेकंड इज ये एक अप ट्रेंड के बाद आई, विच मींस अगर बेयरिश कैंडल अप ट्रेंड के बाद आती है, इट हैज लॉट्स ऑफ रेलेवेंस। तो इससे दो चीज साफ होती है। नंबर वन, दैट कैंडल स्टिक्स नीड्स कंफर्मेशन, विच मींस जैसे ये लो टूटता है the second candle, the candle patterns get confirmed. So once the candle patterns get confirmed, मेरा ध्यान अभी मंदी में, my risk management is defined. So मेरा अभी stop loss defined हो गया. So direction is defined, it's down. Stop loss is defined, it's down. ये दो चीजें मुझे मिलती है सर कैंडल से। बाकी आप डिसाइड करो, आपको बेयर कॉल स्प्रेड करना है, आपको बेयर पुट स्प्रेड करना है, आपको डायरेक्ट फ्यूचर शॉर्ट करना, रिस्क और डायरेक्शन डिफाइन होती है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस मिथिलेश जी? गॉट इट। सिर्फ डायरेक्शन और स्टॉप लॉस डिफाइन होता, रेस्ट you have to combine it with your trend and other studies. Candles is a additional information which you get, which helps you to a great extent to plan a trade. So another question I have, why does it happen? I mean, price is going higher higher next day without, see, एज ए ट्रेडर क्यों हो रहा, वी डोंट हैव आइडिया। एज ए ट्रेडर ऐसा हुआ तो हमें ऐसा एक्शन लेना है। गॉट इट सर? नागेंद्र जी, because I saw dark cloud cover, now let me be negative on the market, as simple as that sir. Give me either a yes or a no if I have answered your question. So then the third the pattern which we are going to see is a bullish piercing. Piercing में previously एक मंदी का दौर चल रहा है, prices are declining declining declining. Then one fine day you see एक ग्रीन कैंडल जो है वो प्रीवियस रेड कैंडल का लो तोड़ दिए, बट व्हेन क्लोजिंग तक एक स्ट्रॉन्ग रैली उस दिन आई, एंड ऑन दैट डे इट क्लोज मिडवे अबव दिस कैंडल, 50% मार्क के ऊपर बंद हुई। दिस इज व्हाट वी कॉल अ बुलिश piercing candle. So once we see a bullish piercing candle, all we know is the direction can change, the swing can change. We have a stop which is defined for risk management, and we have enough evidence right now in terms of candlestick for reversal. So let's see an example of a bullish reverse, bullish piercing candle. So I'll go to Nifty. So let us look at some of the stocks. That's Mahindra and Mahindra. We saw one candle. Now let's look for a bullish piercing. So so this is a bullish piercing candle on Mahindra and Mahindra. Right? Can you see everybody? भाव नीचे जा रहा था, it was falling. Then what happened? Price इसके it went below this candle's low, right? And there was a rally throughout the day, and prices closed 50% above the previous candle's body. So this is what we call a bullish piercing candle. Everybody clear how a bullish piercing look like? तो डायरेक्शन वहां से मुझे एक शॉर्ट टर्म स्विंग मिला। ओके, दिस इज एन क्लास एग्जांपल ऑफ अ बुलिश पियर्सिंग कैंडल। डिक्लाइन के बाद आपको इस पे ध्यान रखना है। और सेकंड चीज आप मार्क करो, अगर बुलिश कैंडल पैटर्न सपोर्ट्स पे भी आती है, इट कंफर्म्स योर सपोर्ट लेवल्स। कैंडल स्टिक्स एक एडिशनल सपोर्टिव टूल्स है आपकी अदर स्टडीज के लिए। ये एक आपको अलार्म बेल सेट करती है, भाई अभी मंदी में मत रहो, बुलिश पियर्सिंग कैंडल दिखा है, मंदी है तो काट लो और तेजी का प्लान करो। एवरीबडी क्लियर? What is a, how does a bullish piercing look like? Give me either a yes or a no. I'm getting yes from all. That's great to know. Second, other candle patterns which we are now going to see is a bullish Harami candle.
ये हरामी गलत वर्ड नहीं है, हरामी का मतलब जापानीज में इज अ प्रेग्नेंट लेडी, right? So a bullish harami candle means in Japanese it's a pregnant lady. So the first candle has a filled body in a downtrend. पहले एक swing down चल रही है, मंदी का दौर चल रहा, भाव नीचे जा रहे, prices are going down, fine. After that भाव रुक जाते हैं. And then the next green candle जो हमें दिखती है, this green candle नाई previous day का high तोड़ा है, neither it has gone below the previous day's low. वो previous day के candle के अंदर में रहते. That's why we call harami or a pregnant lady. So once you notice this, and the second candle real body doji jaisi dikhti hai. Why we are saying it's a doji? Because the candle which is what we call an inside candle is a very very small candle. देखने में बहुत छोटी candle लगती है, price range बहुत कम है, volatility खत्म हो गया, एक range bound movement था throughout the day. Location is, अगर आपको bullish harami candle appears in a downtrend, it signals that a low is in place. But हर एक candle में reversal चाहिए, which means अगर high निकल गया, then only it's a reversal. If it's a two candle pattern bullish, let the both candles highs be taken out for you to be bullish. If it's a bearish candle, let the candles low get breached for you to be bearish. Okay, let's see how does a bullish harami candle looks like. अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रीवियसली द स्विंग इज डाउन, भाव एक मंदी के दौर से गुजर, फिर एक बार जोर से prices decline, what we call a very sharp decline. And if you see this candle is within the previous candle's high and the low. Getting it? So this is what we call a inside day भी इसको बोल सकते, but it's a reversal candle. After that, once the high gets taken out, we call it as a reversal. So everybody clear? How does a bullish harami candle looks like? Give me a yes or a no, friends. So let's go and have a look. बहुत बार inside trace हमें दिखते. So can anybody spot such candles? Yeah, there it is. This candle, if you see, is a bullish harami candle after a decline. Previous candle के high low के अंदर में था and it was a doji. Got it now? Will you able to spot it? Inside day, नाई previous day का high के ऊपर गया, नाई previous day के low के ऊपर गया. This is what we call a bullish harami candle pattern. Yeah, I want yes from all before we go next. अभी देखिए जो हमने कैंडल्स पढ़ी है, ये डिक्लाइन के बाद बुलिश हरामी, कैन यू सी यहाँ पे प्राइस राइज कर रहे हैं, एंड ओवर हियर व्हाट डिड यू गेट, वॉट एवर वी हैव स्टडीड राइट नाउ, दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर. गॉट इट एवरीबडी? सो स्विंग हाई और लो के बाद आपको सिंगल डबल और ट्रिपल कैंडल पैटर्न रिवर्सल देखनी है. सिंगल काफी मिलेंगे, डबल रेयर है, ट्रिपल वेरी रेयर, बट व्हेन यू गेट आपको इसका नोट करना है एंड यू शुड एक्ट अपॉन इट. So that was what we call a bullish harami, which is a reversal pattern. Same way we get a bearish harami pattern also. अगर इसी candle pattern की beauty है, अगर जो candle pattern bullish है in a decline, same if it appears in an upside, it's a bearish. So it's a double candle pattern which is a bearish harami. So the first candle is a green. पहले एक तेजी का दौर चल रहा था, there was an upswing, fine, prices are going up, great, आप भी तेजी में. फिर suddenly prices halt, वो volatility खत्म हो गई और एक दिन exact market एक range में पड़ा रहा, और ये हमेशा आपको uptrend के बाद ही दिखेगा. And once you spot this, देखिए जो red candle दिख रही है हमें, वो previous candle के it never broke the high, neither it went below the low. So ये जो candle है, it is contained within the previous candle. That's why the word harami means a pregnant lady. If it appears in an uptrend, it tells us that a high is in place. So this is an example of a bearish harami candle. Prices are going up, 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 and here you spot a bearish harami pattern, which means अगर ये दो कैंडल का ये लो टूटता है, the candle gets confirmed
And since it's a bearish, now there is a downward bias in price. A good question. I think I've answered all the questions. Okay, Mithilesh ji says, are, are such patterns applicable for intraday? And if yes, what should be the candle period? मिथिलेश जी कैंडलस्टिक जो एक स्टडी है इट्स अ स्विंग ट्रेडर स्टडी डे ट्रेडिंग में देखिए हर 5 मिनट में एक कैंडल बनती है तो सारी पैटर्न्स दिख जाएगी सो समथिंग विच अपियर्स very often loses its relevance. So I am not a big fan of candlestick for day trading. If you want, you can use it, but candlestick as a study is something which is used for swing or a higher time frame. सिर्फ डेली टाइम फ्रेम तक आप इसको रिस्ट्रिक्ट करो और अगर आपको बीटीएसटी टाइप ट्रेड्स चाहिए तो यू कैन bring it to 2 hours or a 4 hours charts. But I would always prefer candlesticks to give me a perspective of the markets, whether up, down, up, reversal down, on a daily chart for a short term swing trade setup. Have I answered your question, Mithilesh ji? Give me either a yes or a no, sir. Yes. हर एक चीज का एक पर्टिकुलर पर्पस रहता है सर. कैंडलस्टिक का पर्पस है हमें वो दिखाए डेली चार्ट्स एंड हायर टाइम फ्रेम. So that was a bearish Harami pattern. Let's go and look like. Again I repeat, आपको bullish candle मंदी के बाद स्पॉट करना और bearish candle तेजी में. So let's look at let's say a price chart of Cipla. आपको भी कहीं दिखता हो तो just let me know. So this is the price chart of Cipla. Okay. So this we have seen just now, which is previously candle, which was bearish engulfing. Now same way, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, can you see? फिर एक बार upswing है, एक बार रुका. Over here, can you spot this pattern? भाव गिर रहा, and this candle is within the previous candle. And once the low breaks, it gets confirmed. So this is what we call a bearish Harami pattern. आप कोई भी हाई के आसपास ऐसा नहीं है कि ऑलवेज विल गेट अ बेरिश हरामी पैटर्न. इसको हम पार्शियली बोल सकते हैं बट वी नीड अ बॉडी. बट हियर आल्सो इफ यू सी व्हेन आई से हियर इन दिस it's not a textbook perfect but some of the rules are getting accepted over here. So this is the high low of the candle, right? And if I see over here जो next candle थी, the next candle was within the previous day's high low and range. It was not in context of body, but yes, always textbook style nahi milte. Can you see? This was within the previous day's body. So this is what we call a bearish Harami pattern. Everybody clear about this? And candlesticks needs confirmation, which means एक बार ये low टूट जाता है second candle का, that means a bearish Harami pattern is confirmed. So the whole idea is एक बड़ी सी candle दिखी आपको, this one. Next candle which you spotted was a small doji, which was within the previous candle's high, low and range. Don't you find it's an interesting study which shows your reversal? Yes or no, friends? I'll wait for your yes or a no. See, once you start analyzing charts into context of candlestick, you yourself will be surprised. A small observation in terms of price action gives you so much clarity. Now let me go to Nifty. Anybody can spot a bearish Harami in Nifty? I don't think it has appeared as of very frequently. Yeah, ये जो high बना था Nifty में from the earlier candle which we have studied, I'll also take the earlier candle. This is what we call a bearish engulfing. Spotted everybody? तो हमें एक bearish engulfing मिला. After that, 2-4 दिन के बाद immediately, just see this. ये एक बड़ा कैंडल था, ये कैंडल का हाई भी नहीं टूटा और ये कैंडल का लो भी नहीं टूटा. So it was not in context of that, but yeah, a decent reference out there. Okay. Or in this candle, जिसको हम inside day भी बोलते हैं. So be aware of a bearish Rami pattern after a rise in price.
और जो थर्ड कैटेगरी ऑफ कैंडल आती है, व्हेन आई से थर्ड, वी हैव डिवाइडेड कैंडल इनटू थ्री पार्ट्स: single candle pattern, double candle pattern and triple candle patterns. We will stop at triple candle patterns. तो उसमें थ्री कैंडल पैटर्न्स रहती है, ओके, एंड थ्री कैंडल पैटर्न्स में व्हाट वी हैव इज डे वन, डे टू, डे थ्री। डे तीन दिन का भाव कंबाइन करने के बाद ही वी गेट अ कंक्लूजन वेदर हाई इज इन प्लेस और लो इज इन प्लेस। बट if we get a three candle pattern confirmation, it is more relevant. रोज रोज मिलती नहीं है, फॉरगेट रोज, आपको महीने में भी एक दिन नहीं देखने मिलेगा। सो यू हैव टू पेशेंटली वेट फॉर अ थ्री कैंडल पैटर्न्स। और थ्री कैंडल पैटर्न्स में जो फर्स्ट कैंडल पैटर्न हम लोग आज देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार ये दिखाता है एक रैली के बाद स्पॉट करना है, और इट शोज अस दैट अ हाई इज इन प्लेस। सो इवनिंग स्टार का कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? The first candle has a real body in the uptrend which is green. So ये जो कैंडल है वो रैली के साथ ही आपको दिख रही है, ठीक है, प्रीवियसली भी भाव ऊपर जा रहे हैं, we spotted it. The second gaps up, तो सेकंड कैंडल गैप अप होता, आप अभी भी तेजी में हो, आपको लग रहा नहीं अप ट्रेंड इंटैक्ट है, टिल देन इट इज फाइन। बट अचानक तीसरे दिन क्या होता है, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज द थर्ड कैंडल ब्रेक्स द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो एक तेजी का कैंडल, एक मंदी का कैंडल, बीच में एक दोजी, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। वंस यू सी दिस, दिस इज कॉल्ड अ इवनिंग स्टार, एंड इवनिंग स्टार appears in an uptrend indicator a high is in place. So the third candle है gap down on open and close 50% below the first candle. तो ये जो बेरिश कैंडल है वो ये बुलिश कैंडल के बॉडी के 50% नीचे क्लोज होना चाहिए। अभी रूरल है का मेजर मत करो, जस्ट अ ग्लांस, अ लुक says is 50, okay, it's fine. So will you able to spot a evening star, everybody? Give me a yes or a no. It's a triple candle pattern. No, this is an evening star. Prices were rising, rising, rising. Then suddenly आपको यहाँ पे दिखा रैली, एक रैली स्टॉल किया, एक विक आया ऊपर में, विच सिग्निफाई सेलिंग प्रेशर, इट क्लोज अराउंड द डेज लो। फिर डे थ्री में अगर आप देखो तो एक डिप आ गया। सो वन, टू एंड थ्री, ऑल दिस थ्री कैंडल सजेस्टेड मी इट्स एन इवनिंग स्टार, अ हाई इज इन प्लेस। So let's, friends and all traders out there, let's go and look at some evening star candle patterns on the real market. तेजी के बाद ही आपको स्पॉट करना। देखिए कैंडल की ब्यूटी क्या है ना, जब मार्केट अपस्विंग में रहता है तो सब तेजी में रहता है, और जैसे आपको बेरिश कैंडल दिखता आप अलग हो जाओ, आप बोलो अभी तेजी रुक सकती है, करेक्शन आ सकता है। So let's go to some of the price charts. Axis Bank, yes. So Axis Bank में, if you see over here, this was clearly a evening star, rise, एक doji, and this thing. So let me just show you, zoom करके. So this is candle number one, this is candle number two, this is candle number three. So ये तीन कैंडल करके, are you now getting? और जो सेकंड कैंडल है वो ऊपर होना चाहिए, which means it should look like a doji or a indecision, and ऊपर में wick होना चाहिए. The third candle should minimum close 50% below. Once you spot this, it tells you that a high is in place. Okay, यहाँ पे आया. Again, if you see in Axis Bank, can you spot again an evening star? So previously prices were going up and up. एक दिन बहुत बड़ी रैली दिखी आपको. Second day prices gapped up and just closed there. यहाँ तक आपको लगा नहीं, everything is fine, market will rise. Then suddenly the third day prices decline strongly, और ये जो decline है, ये कैंडल का अगर मैं 50% लेता हूँ, it closed 50% below this candle. So once I get this indication that candle number one, candle number two, and candle number three, if I'm combining all the three candles, I'm getting my evening star, which says that a high is in place. So I'll be bearish on the markets. This high will be my risk management level or stop loss. And now I'll be looking for a decline in price once it breaks the low. Now, all will you able to identify the evening star candle patterns? Everybody give me a yes.
or a no? Fantastic. Now let's see uh, uh, on few other stocks. I'll go to Wipro. Yes. So this is the price chart of Wipro. So let me zoom the chart. Let me see if anybody is able to spot it. Ye, are you able to spot anybody? This one over here, sir. Or you can spot it somewhere here also. One, two, and three candles all combined. Okay. So that was what we call evening star, triple candle pattern. See, you have to now train your eyes to pick up single, double, and triple candle pattern. So I've got two questions. I'll take a pause and answer the questions. Just give me a minute. Nagendra says, could you please discuss the bullish? I would that would make it more of an analysis. Let's first do the lesson part. And Nagendra, your question specific, we have specific session for that daily at 3:45 in the evening and morning 8:45 in the morning. So all this trade related queries, I'll answer that. Let's keep this for a learning purpose. Is it okay, Nagendra ji? Give me either a yes or a no, sir. Sure. Appreciate that, sir. Mithilesh ji, see, are such patterns applicable for intraday? And if yes, we should know. As I said, मिथिलेश जी, राठी जी, कैंडल पैटर्न जो है ना सर, वो डेली तक ही उसको सिमिट रखो. बहुत आपको अग्रेसिव ट्रेड करना है, जैसे BTST और इस तरह के ट्रेड्स, तो आप उसको 2 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें. Because candlestick is a broad study and not very specific. It's a reversal directional study and not entry exit stop loss study. Getting my point, sir? So ये आपको broader दिखाती है from the direction perspective, change in direction up or down to up. ऐसा नहीं आज bearish candle दिख गई तो कल से मंदी start हो जाएगी. No, it might take its time. So candlestick are additional supportive tool, a great way to club it along with your existing studies. If I've answered your question, Rathi ji, give me a yes, sir. Okay. जिस तरह रैली के बाद हम इवनिंग स्टार देखते हैं, वैसे बाजार जब मंदी के दौर पे गुजर रहा है तो हमें मॉर्निंग स्टार स्पॉट करना है. हाउ टू स्पॉट अ मॉर्निंग स्टार? चलो एक मंदी का दौर आ रहा है, उसके साथ साथ ही हमें एक रेड कैंडल देखने मिल रही. नेक्स्ट दिन भी मार्केट गैप अप हो जाएगा तो विल थिंक भाई मंदी चल रहा है, गैप डाउन है, अभी और मंदी है. बट उस दिन का जो क्लोजिंग है ना, वो बहुत नैरो रेंज में एक हैमर टाइप कैंडल दिख सकता है आपको. कैंडल विद अ लॉन्ग टेल ऑन द डाउन साइड. उसके बाद डे 3 देयर इज अ बुलिश कैंडल. सो एक गैप डाउन एंड देन अ बुलिश कैंडल. अगर आफ्टर अ डिक्लाइन मंदी के दौर के बाद ये तीन कैंडल का पैटर्न दिख रहा है, सो वी कॉल इट एज अ मॉर्निंग स्टार. मॉर्निंग स्टार सवेरा दिखाता है, मंदी से मार्केट को बाहर निकालता है, and that's why we call it as a morning star. So how does a morning star look like? This. Previously prices are declining, then you have a red candle with in context of the decline. चलो मंदी चल रहा, आपने इतना फोकस नहीं किया, बट अचानक सेकेंड डे जब आपको कैंडल विद अ बिग टेल ऑन द डाउनसाइड दिख रहा है, देन यू वेट. तब एक इंडिकेशन आ सकता है भाई मॉर्निंग स्टार बन सकता है. एंड the moment you see the third candle, which is a bullish one like this three candle pattern suggests that it's a morning star, which is a reversal. ठीक है, अभी मार्केट भी मंदी के दौर से गुजर रहा है, डिक्लाइन है निफ्टी में. तो आप रोज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बुलिश रिवर्सल, रोज आप स्पॉट करो कब आ रहा है. द डे इट कम्स एंड इट रिवर्सेस, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर स्टडी. So morning star, let's go and check it out in some of the stocks. So I'll go to, if you have want any stocks, please tell me. आपने अगर कहीं देखा हो तो. So this is Poonawalla FinCorp. So morning star, can you spot over here also?
यस, ये मुझे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है भाई, और मैं जूम कर लेता हूँ। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, आफ्टर डिक्लाइनिंग एक हैमर जैसा कैंडल मुझे दिख रहा है, एंड देन देयर वाज अ बिग ग्रीन कैंडल। सो अगर तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, इट टेल्स मी दैट देयर इज अ मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न एंड देन देयर वाज अ बिग रिवर्सल। कैंडल में कंफर्मेशन है, विच मीन्स अगर तीन कैंडल पैटर्न है तो ये हाई निकलने के बाद ही कैंडल गेट्स कंफर्म। इफ इट्स टू कैंडल पैटर्न्स बुलिश, सेकेंड कैंडल का हाई निकलने के बाद इट गेट्स कंफर्म। सो दैट पूना वाला, and that's what we call a morning star. Let's see if we can spot few more. Right. So that was a morning star. Everybody will able to spot a morning star. तो एक चीज आप अगर डायरी अपनी ट्रेडिंग प्लान या डायरी में लिख लो, अगर मंदी के दौर से भाव गुजर रहा है तो गुजरने दो, लेट मी वेट फॉर अ बुलिश रिवर्सल कैंडल। अगर प्राइस तेजी के दौर से गुजर रहा है तो लेट इट प्ले आउट, लुक फॉर अ बेयरिश रिवर्सल कैंडल। इस तरह से यू हैव टू अप्रोच द मार्केट। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? इन बिटवीन इतना रेलेवेंस नहीं होगा। कैंडल स्टिक वी आर नाउ यूजिंग डबल एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स फॉर रिवर्सल एंड नॉट कंटिन्यूएशन। ओके, आफ्टर दैट लेट्स गो टू थ्री कैंडल पैटर्न्स अगेन। ये कैंडल बहुत रेयर है, बट जब आता है तो द आई हैव सीन इट वर्क्स वेरी वेल, जिसको हम थ्री वाइट शोल्डर्स बोलते हैं। इट्स अ बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न। जो फर्स्ट कैंडल है एकदम ग्रीन है, सेकेंड भी बहुत स्ट्रेंथ दिखने मिला, इट्स अ ग्रीन बुलिश कैंडल। थर्ड डे भी काफी स्ट्रेंथ मिला आपको, इट्स अ ग्रीन बुलिश कैंडल। अगर 3 दिन लगातार तेजी होती है विथ अ एक्सपेंडेड रेंज बुलिश बॉडी ग्रीन कैंडल, देन वी कॉल इट एज अ थ्री वाइट शोल्डर। थ्री वाइट शोल्डर्स का मतलब है अभी यहाँ से तेजी खुलेगी जोर से। So the moment you spot a three candle pattern, one, two, three shoulders, it shows that prices are likely to now see a substantial, और three shoulders month में एक बार भी नहीं आते, it's rare, but when you spot it, please act on it. So three white shoulders, let's go and check it out in some of the stocks. So yeah, it's there. I have noted it down somewhere. Yeah, here, sorry. अभी यहाँ पे आप देखो, आपका फर्स्ट व्हाइट शोल्डर सोल्जर मिला आपको, यहाँ पे दो है तो ये थ्री क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये कैंडल नंबर वन, फर्स्ट व्हाइट शोल्डर ग्रीन। कैंडल नंबर टू, फिर से जोर से तेजी हुई। कैंडल नंबर थ्री, फिर से जोर से तेजी हुई। ये सब रेयर कैंडल पैटर्न है। थ्री कैंडल, थ्री व्हाइट शोल्जर्स। एक बार ये दिखा था कि यहाँ से एक तेजी खुलेगी। गॉट माई पॉइंट नाउ एवरीबडी? थ्री व्हाइट शोल्जर्स, कैन यू ऑल नाउ एबल टू स्पॉट इट? लगातार 3 दिन की तेजी, बट डिक्लाइन के बाद बॉटम, ऐसा नहीं टॉप में आएगा तो टॉप बन जाएगा। मेक श्योर बुलिश कैंडल मंदी के बाद ही आपको देखना है। ओके, डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ कॉलिंग दिस एज अ थ्री वाइट शोल्डर। तेजी में मुझे बुलिश कैंडल नहीं स्पॉट करना है। बुलिश कैंडल मुझे एक मंदी का दौर जब गुजर रहा हो और बेसिंग हो रहा हो, मुझे वहां पे स्पॉट करना है। तो लोकेशन इज द की इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल। Okay, so that's a three white shoulders. Opposite of three white shoulders is what we call three black crows. देखिए, we all know also in terms of mythology also that crows are back. हम बोलते हैं ना काला कौवा and all those stuff, right? So that's how say Japanese में candlestick के नाम day to day uses और reference point से आए। So three black crows suggests that now बहुत bearishness आ सकती है। So the first candle is a very bearish candle, big body closes near the day. Second दिन भी जोर से मंदी हुई। थर्ड दिन भी जोर से एक there was a decline or we can call it a मंदी। एक बार लगातार 3 दिन एकदम ब्लड बाथ दिख रहा,
then we call it as a three black crows, which says that now it is the start of something really negative. Crows do signify negativity. Am I right or wrong, friends? Give me either a yes or a no. Crow signifies negativity. तो तीन ऐसे लगातार हमें कैंडल रेड दिख रहे, इट ऑल्सो सजेस्ट अस दैट देर इज अ नेगेटिविटी इन द प्राइसेस एंड प्राइसेस शुड नाउ डिक्लाइन. तो कैंडल ये हमेशा आपको तेजी के बाद देखना. द फर्स्ट कैंडल इज अ नो इट्स अ green, sorry, red, second is red, third is red. Okay, so it's a three candle pattern, three black crows. So let's go and check it out. Three black crows candle pattern. So I'll go to, let's say, Wipro or any stocks which you want, because मेरे memory से I'm relying on it. So if I go to the price chart of Wipro on over here, कहीं पे भी आप देख लो जहां से एक मंदी का दौर आया था. ये टॉप से सब कुछ ठीक चल रहा था. देयर वाज अ रैली इन विप्रो. ओके, नाउ कैन यू नाउ स्पॉट इज पहले दिन एक जोर से मंदी हुई, डे कैंडल नंबर 1. फिर भाव गैप डाउन खुला एंड देयर वाज अ बिग डिक्लाइन, एंड देन देयर वाज अ डिक्लाइन थर्ड डे. सो थर्ड क्रो इज अ बिट स्मॉल, बट सेकेंड क्रो ने काफी डिस्टेंस कर लिया. एक बार ऐसा तीन लगातार आपको रेड 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 कैंडल्स दिख रही है, सिग्निफाइज कि कोई जोर से माल बेच रहा है. Getting my point? And the moment you see a three black crows, it says that now there is a strong negative bias for the price. And from that day, can you see Wipro decline all the way down till here? So will you all be able to identify three black crows? Day 1 Mandi, day 2 Mandi, day 3 Mandi after a rise. Give me a yes or a no, friends, if you all be able to spot it. और ऐसा नहीं कि छोटा कैंडल होना चाहिए, इसको थ्री ब्लैक क्रोज नहीं बोलेंगे. यहाँ पे भी तीन कैंडल है. Can you see candle 1, candle 2 and candle 3? So I will not call it as a three black crows. For a three, for it to get identified as a three black crows, बॉडी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी खुल के मंदी दिखनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि आधा आधा परसेंट रोज भाव नीचे गया. नो, दो दो तीन तीन चार चार परसेंट की कैंडल्स दिख जाए तब आप बोल सकते हो इट्स अ थ्री ब्लैक क्रोज. अगर ये कैंडल हम देखते हैं, ये 3% भाव डाउन था. वही जगह इधर की कैंडल में देखता हूँ एक छोटी सी है, इट विल बी हार्डली 1%. नाउ यू गॉट इट. मेजर जो कैंडल का है वो बड़ा होना चाहिए, and no need to measure in term of percentage only. I just showed for the reference point of it. आप विजुअली देख लो, इट्स अ बिग रेड कैंडल. नॉर्मल हम कैंडल्स देखते थे इतनी बड़ी बड़ी नहीं दिखती, बट टुडे आई एम एबल टू सी अ रियली ग्रीन कैंडल. सो दिस मार्क्स as a highs in place and three black crows are there, which is a sign of bad omen. And in terms of price, bad omen is this thing. Now remember one thing, bearish candle rally के बाद देखो and bullish candle decline के बाद देखो, right? So that's from the candle part of it. And another candle which I would like to say is matching low and matching high. See, candles, if I want, I could include more, but these are sufficient enough for take you trading to the next level. So since I have mentioned, I'll show you what a matching low and the matching high is. वो two candles patterns में आती है. तो बहुत बार क्या होता है, एक बार सपोर्ट बेस आता है ना, so when it comes what happens, एक matching low आता है. Only two candles pattern है, मतलब ये और ये candle pattern का low same है. Once you get a matching low, that is also bullish. Same way, अगर रैली के बाद दो हाई अगर सेम आते हैं, इसको हम बोलते हैं मैचिंग हाइस. So which is considered bearish, provided you get confirmation. Bullish का confirmation क्या होगा? If it takes out the next candle's high. Bearish का confirmation क्या होगा? If it takes the second candle's matching highs low. So these are another two candle patterns, which is a matching low and a matching high, and it's very, very relevant. So I have picked up candles which are really relevant for the markets. Or let's see how many of you spotted today. I'm not saying whether it's right, wrong, will it fall, but from the study point of view,
एक तो 3 कैंडल पैटर्न बनी है निफ्टी में. कैन एनीबडी स्पॉट इट विच इज दिस 3 कैंडल पैटर्न? लेट्स सी वेदर आपने 3 कैंडल पैटर्न्स कौन सा है. भाव ऊपर गया, गैप अप, आज गैप डाउन. आई लीव इट टू यू. ओके, so that was a detailed about double and triple candle patterns. And now we have completed our program on the candlesticks part of it, which is single, double, and triple candle pattern. Would this make you a confident trader? All those participants who have not seen our first session on single candle patterns, please go to the YouTube channel or our website and watch the first part of the candlestick series. Today was the second. आपको 2 घंटे का ये session है, this and last combined, that will make you a complete literate as far as candlesticks patterns are concerned. Yes, now Deepak ji, we are open to Q&A, sir. If anybody has any questions. Yeah, that was the matching high and the matching low candles which I showed you. So matching low you have to see after a decline, those candles का low same है, high निकलने के बाद confirmation we get. And same matching high means दो candles की high same है after a rally, और अगर low टूट जाता है over here, the second candle's low, then we get a confirmation के a matching high or a same high is in place and prices should decline. So that's all from my side today, friends. Now we are open to Q&A. Yes, Deepak. So Sure, sir. We can go for Q&A, but before that, if you allow, we can launch our second poll. Meanwhile, yeah, we we'll can ask the users to drop their questions. Yeah, please drop the question and we'll take a pause for a poll. And those participants who have not seen the session 1, make sure you go and do it. So just take a poll. Did you attend our previous webinars? 83% are saying yes and 17% are saying no. So even 83 who are saying yes, if you have not watched our part 1 on candlestick pattern, which is single candle pattern, make sure you go and watch it on our website or on our YouTube channels in the video section. And 11% participants says no, they have not. Make sure you watch the entire series. Take your time out and watch it. Yes, sir. Sir, we have covered all the questions, just one pending from Mr. Pramod Kumar Kaushik. Yeah, Pramod Kumar ji has rightly spotted. It's a evening star, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. Pramod ji, great, sir. Yes. No more questions, sir. Okay. So thanks, friends. Make sure you take out your time. Those who have not watched the part 1, make sure you go to our YouTube channel and watch the part 1. And then again revise the part 2. Make sure you attain a certain level of expertise as far as single, double, and triple candle patterns are there. And that will take your trading to next level. And candlesticks are additional supportive tool. Every trader requires the interpretation of candlesticks, and they are integral part of a trader's trade plan. On that note, thanks everybody for joining the session. Thanks and have a nice day. And again, we'll meet tomorrow at 8:45 in the pre-market open session. Make sure you join through the links which you get or be there on Thank you, YouTube sir. Live. Thanks. Thank you.